Hello students and welcome to Mehta PG College online gallery. Here we discuss paper third algae brachyphytal lichen. Today the session is come from the diverse habitat of algae. We are here to discuss the third segment of habitats, unusual habitats of algae. In last session we can discuss aquatic habitats and terrestrial habitats of algae. Unusual habitats are those habitats where a normal plant or a vegetative growth cannot be developed. ठीक है? In algae they have these type of adaptations to complete their lifespans in adverse conditions. So here we can discuss a different type of unusual habitats like first one is chrysophytes. क्राइसो का मतलब होता है चिल्ड या चिलिंग. फाइट्स मीन्स प्लांट्स. मीन्स हियर वी कैन ऐड algae suitable to grow on snow or ice. They are adapted to survive at about lower than 2 degree centigrade or in minus degree centigrade temperature. ठीक है? They are placed on the top of mountains and in Arctic places, European places, on polar regions. So these are known as chrysophytes. Their various colors impart like red, brown, yellow, green and black present the color of snow or mountains. Like some examples of chrysophytes: Chlamydomonas, Yellowstonensis, C capital and Y in small letter in botanical name ICBN, that gives the mountain head in European countries as green yellow. Green yellow color. Another one is also considered as nivalis, Chlamydomonas nivalis. That gives red color. Or the pigment on red algae, the top of mountain or the snow is also shows colorful. So that color is not of snow, that the color is present by algae. NEVALIS nivalis. एक और हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे हेमेटोकोकस निवेलिस. Hematococcus
nivalis. Here also represent the red color of Arctic mountains. On Arctic mountains. एक अलग नाम और दे देते हैं, स्कॉटिलिया निवेलिस. That gives black color. और भी बहुत सारे नाम हैं, रैफिडोनीमा ब्रीवी स्टोरी. रैफिडोनीमा ब्रीवी story also gives black color to the algae, जिसकी वजह से स्नो और माउंटेन टॉप्स एंड, अगर अपन बात करें तो हाँ, माउंटेन टॉप्स एंड स्नो का जो कलर है वो हमें ब्लैक दिखाई देता है. ओके देन नेक्स्ट, जब हम चिल्ड इफ़ेक्ट यहाँ पे ले रहे हैं तो इसी में सेकंड ऐड कर लेते हैं चिल्ड के साथ साथ थर्मोफाइट्स. थर्मो मीन्स टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, थर्मल, एंड फाइट मीन्स प्लांट्स. मीन्स algae आर suitable in hot water springs. Means these kind of algae are adapted to complete their replication and metabolism biochemical reactions at very high temperature, about 56 to 60 or 65 degrees Celsius temperature. Suitable to 56 to 70. Normally the temperature required for enzymes suitable are varieties different, but suitable is about range of 27 to 34 degree Celsius. But these kind of biochemical reactions are also occurs in higher temperature. Examples of thermophytes like Heterohormogonium. हेटेरोहॉर्मोगोनियम. और एग्जाम्पल हम ऐड कर सकते हैं लाइक ऑसिलोटेरिया, ब्रीवी, एक सिनेकोकस भी हम ऐड कर सकते हैं. स्पीसीज या स्पीसीज में हम कंसिडर करें तो एलिगेटा, these are member of Cyanophyceae. Also known as Mixophyceae.
Next, third one is lithophytes. Litho means strong rocks. तो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं ग्रो ऑन रॉक, stones and walls. The surface of rocks or stones are very hard. They cannot be able to absorb water and minerals. So, on the surface of rocks or stones, it is very adverse condition to grow of any plants, but few algae are very suitable because they develop rhizoid structures which capable to adhesive the thallus of algae and also useful in absorbing minerals and waters from the environment. Examples are Vaucheria species, Cytonema species and Formidium. Cytonema and Formidium. Okay students, next अनयूजुअल हैबिटेट्स में हम कंसिडर कर लेते हैं ट्रीज या लार्ज साइज प्लांट्स के साथ। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। वाउचेरिया स्पीसीज, साइटोनीमा एंड फॉर्मिडियम। इसी में ही कंटिन्यूसली फोर्थ पॉइंट इज प्लांट से रिलेटेड ले लेते हैं एपीफाइटिक। फिफ्थ इसी में ले लेते हैं फिल्लोफाइट्स। Sixth is endophytes. According to their terminology, epiphytic means grow on the surface like trunk, bark, roots, rhizoids, etc. on large plants. On large plants. क्लियर है? एपी means on the surface, phyllo means leaf, phyte means plants, means grow on the surface of leaves
endo means inner side, phyta means plant, means grow into the body. Intercellular or intracellular. Intercellular means between two cells, or intracellular means inside the cell lumen. Inside the cell lumen. और inter means between two adjoining cells. Between two adjoining cells. Here are the examples of epiphytes are Oedogonium, Zygnema, Chaetophora, etc. Zygnema, Chaetophora, Oedogonium species, etc. In epiphyllophytic, we are considered as Rubus, Phyco, Peleus, etc. इन एंडोफाइटिक हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं साइनोफाइसियन, लाइक नॉस्टॉक, एनाबिना, present in bryophyte Anthoceros thallus. Inside the Anthoceros thallus, nostoc is present in a gymnosperm Cycas coleroid root. Also consider as Azolla. AZOLLA. Same in this variety, we also consider as epizoic and endozoic. Term is 7th epizoic and 8th endozoic. Epizoic means grow on the surface of chordates and non-chordates vertebrates, means animals. And into the body of
grow into the body of animals. Here we also add Juclorella present in Hydra body, and here हम यहाँ पे कई सारे क्रस्टेशियंस के नाम ऐड कर सकते हैं, आर सुटेबल टू ग्रो एल्गीज ऑन देयर सरफेस. Like Cladophora species, on snails. Cladophora species on snails. Or here we can also consider as Juclorella on Hydra. Viridis species. हाइड्रा विरिडिस की बॉडी में जुक्लोरेला एल्गी जो है वो प्रेजेंट होती है एज सिम्बायसिस. एक और इसी से रिजेम्बलेंस नाम दे सकते हैं जू जैंथियम, जू जैंथिएला, Zooxanthilla in sponge. Next, ninth is symbiotic algae. Symbiotic algae. Here we also consider as endozoic and endophytic. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो एल्गीज हैं लाइक जुजेंथिएला, जुक्लोरेला एंड एंडोफाइटिक लाइक साइनोफाइसी के मेंबर्स लाइक एजोला, एनाबिना, नॉस्टॉक्स, दे आर आल्सो हैव ए symbiotic nature. Symbiotic means live with another species या living organism. क्लियर है? और इसमें हम बात करें तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइकेन्स. म्यूचुअल रिलेशन शिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस. एल्गीज की हम बात करें तो the group of algae are known as phycobiont and the part of fungus is known as mycobiont. In algae, phycobionts are the member of साइनोफाइसी जिसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरिया, एनाबिना, एजोला, क्रूकोकस एटसेट्रा, सिनकोकस एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ क्लोरो
फाइसी। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक क्लोरेला etc. and few species of Chlamydomonas. In mycobionts, they have the member of Basidio, Phyci and Ascomycetes. बेसिडियो फाइसी की जगह बेसिडियो माइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज. They are in symbiotic relationship, they are a mutualism. If we break the relationship between algae and fungus, both are dead, cannot be able to survive in a single position. These are known as lichens. And the last one we are consider as algae, क्योंकि हमने अब तक algae को पढ़ा है various symbiosis, environmental friendly, autotropics, pioneers of the plant kingdoms, but few examples of algae are also considered as parasite. Parasitic algal habitats. Example is Cephalrose. Plants and animals. Example is Cephalrose. Cephalrose species cause red rust on tea. चाय की पत्तियों पर Cephalrose इसकी स्पीसीज है विरेसेंस. विरेसेंस यहाँ लिख देता हूँ VERISCENSE विरेसेंस. Cephalrose virescens causes red rust disease on tea. ठीक है, इस तरीके से वी आर कंप्लीटेड हियर द रिमेनिंग हैबिचुअल कंडीशंस इन दिस एपिसोड. अनयूजुअल हैबिटेट्स वी आर डिस्कस हियर 10 टाइप ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स लाइक ऑन ग्रोन स्नो क्राइसोफाइट्स. नेक्स्ट ग्रोन स्टोन्स आर लिथोफाइट्स. थर्ड वन इज ग्रो ऑन हॉट वाटर springs known as thermophytes. Fourth one is epiphytic. Fifth one is epiphyllophytic, grow on leaves. Endophytic, grow inside the plants. Epizoic means grow on the surface of cryptogams, plants, animals surface. ठीक है. Endophytic endozoic suitable to grow inside the animal bodies like intestines and lumens like Hydra, Juclorella. ठीक है. And symbiotic algae example best are lichens. And last one 10th are discussed here as a parasite algae like Cephalrose virescens. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.